What is the role of dopaminergic neuron in the substantia nigra part of brain? What is the role of a dopaminergic neuron in the hypothalamus? What is the role of your substantia nigra in the various part? Hypothalamus, substantia nigra, like that. Okay, in the CTZ, we have seen that. So we have seen the role of dopamine and its receptor, then dopaminergic neuron in the various part of brain in the last lecture. Okay, so mostly the limbic system is associated with, or limbic system is related with the psychosis and psychotic effect. So whatever drug that will block the dopamine receptor in the limbic system, that drug will act on a drug will act as an antipsychotic. Okay, so whatever the drug that will block the dopamine, or that will increase the dopamine, in the substantia nigra part, that drug will be a potential drug in the Parkinsonism. Okay, so we have seen all that different dopaminergic neurons and their location and their distribution and their functions. So in today's lecture we are going to discuss drug used in the Parkinsonism. So it is a small chapter, and we will try to finish this chapter in just 1 hour. Okay, so I was very busy, and in the next week also I am a little bit busy, so I might not able to take the lectures on Wednesday, but definitely again we will take a lecture on Sunday. Don't worry. So I think in the morning session, Cohen More sir has taken one session, right? So in this lecture we are going to see drug used in the Parkinsonism. So let's start. So first of all, you should know what do you mean by Parkinsonism, what do you mean by Parkinson disease. Okay, so actually it's a neurodegenerative disease. Neurodegenerative disease. Neuro means neuron, degeneration means destruction, or destruction of destruction of neuron. So neurodegenerative disease. Okay, so neurodegenerative disease. Mostly the degeneration of neuron. Which kind of neuron? The degeneration of dopaminergic neuron in the specific part that is known as the substantia nigra or nigrostriatal tract. So degeneration of dopaminergic neuron in the nigrostriatal tract of your brain, या फिर आप बोल दे कि dopaminergic neuron का डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ पे? जो सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्ट होता है आपका ब्रेन का, वहाँ पे dopaminergic neuron का डिस्ट्रक्शन होता है. और आपको मालूम है लास्ट लेक्चर में अपन देखा था, we have seen in the last lecture what is the role of dopamine in the substantia nigra. So decreased level will result in the Parkinson disease, extrapyramidal syndrome. So that disease is nothing but the Parkinson disease. So we'll see typical symptoms of Parkinson disease. You can see in the screen, on the screen, there is one man, old man. Okay. So what is the symptom? What are the symptoms? So first is a masked face expression. Masked face expression. जो एक्सप्रेशन है फेस का वो स्टिफ हो जाएगा मतलब जैसे होता है ना, जो एक्टर के लिए होता है, जो एक्टर्स जैसे आपको एक्सप्रेशन देते हैं. ओके, तो वो एक्सप्रेशन आप दे नहीं सकते. सो द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द पार्किंसन डिसीज, he will not able to express by using facial expression. So facial expression will be stopped. Okay, facial expression will be okay, that will not able to give the facial expression. That means the facial expression is nothing but masked facial expression. ठीक है, मतलब facial expression वो दिखा नहीं पाएगा, वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि वो उतना उसका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की वजह से वो मसल वगैरह कंट्रोल नहीं रहता उसके अंदर. ठीक है, दूसरी बात ये हुआ है. दूसरा क्या है, उसका जो गेट है, गेट मतलब स्ट्रेट जो आप खड़े रहते हो, so he will not have a proper gait, he will have a forward tilt gait. जब तक ये सामने झुका हुआ है यार, so gait disturbances will be there. Stopped posture, जो posture है वो straight नहीं, वो सामने झुका हुआ. ठीक है, then rigidity मतलब क्या? So whatever muscles are there in your body, so those muscles are flexible. Okay, so you can twist the muscle, you can turn the muscle. Okay, so that means flexible. So it is a flexible. See, so if it is a stiff means it is not flexible. Stiff means एक ही जगह पे रहेगा. Flexible मतलब क्या कि आप flexible हो. So muscular rigidity means what? It is not a flexible. Rigid means it is not a flexible. Stopped posture, then face mask expression, rigidity, forward tilt trunk, then fixed elbow and wrist. कि जो elbow है आपका वो fix रहेगा. जैसे normal patient होता है elbow fix नहीं है मेरा जैसे आप मैं freely move कर सकता हूँ. Those patient who is a Parkinson patient, his elbow will be fixed. His elbow will be fixed.
रिस्ट विल बी फिक्स, वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। उसके बाद स्लाइटली फिक्स्ड हिप्स एंड नीज, जो हिप होता है उसका हिप बोन होता है वो फिक्स हो जाएगा और वो ज़्यादा मूवेबल नहीं रहेगा। उसके बाद नी होते हैं उसकी घुटने, वो भी मूवेबल नहीं रहेगी। देन ट्रिमलिंग, ट्रिमलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, शेक करेगा, मतलब हाथ ज्यादा शेक करेगा, उसका पैर ज्यादा शेक करेगा, इनवॉलंटरी शेकिंग ऑफ योर लिम्स, दैट इज अ ट्रिम्बलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज। देन शफलिंग शॉर्ट स्टेप गेट, मतलब आप बड़े बड़े लंबे स्टेप्स नहीं ले सकते, एकदम शॉर्ट धीरे धीरे चलोगे क्योंकि आपको डर लगता है कि गिर ना जाओ, ठीक है। दैट दोज आर नथिंग बट द symptoms of Parkinsonism. So that is nothing but the symptoms of Parkinsonism. In addition to that, then you will have memory, loss of memory, or loss of memory, amnesia, then siluria. Your saliva will be dropping out from your mouth. ठीक है, आपका मुंह में से सलाइवा लाल टपक जाएगा। उसके बाद लैक्रिमेशन, ठीक है, ट्रिमर्स, involuntary contraction of muscles, etc., etc. Then loss of appetite, okay, loss of appetite and all that, confusion, memory loss, delusion, hallucination, these are the symptoms of Parkinson disease. Now this Parkinson disease, why this happens, why individual get this Parkinson disease, we will see that. So this Parkinson disease first was described by one scientist known as James Parkinson in 1870, and from that onward the disease is known as a Parkinson. ये पार्किंसन किसने बोला था, जेम्स पार्किंसन ने ये डिस्क्राइब किया था डिसीज, उसकी वजह से उसको पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स आर अकाइनेशिया, अकाइनेशिया मींस व्हाट, अकाइनेशिया मींस लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपका जो मसल का स्ट्रेंथ है, मान लीजिए कि आप एक हाथ से या फिर आप एक हाथ से 2 किलो का वेट उठा सकते हो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ, इट डिफर्स इंडिविजुअली, ठीक है। सो इंडिविजुअल का जो स्ट्रेंथ होता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो एक हाथ से उठाने का, सो इट इज लॉस्ट, वो अगर कम हो गए तो उसको बोलते हैं डिस्काइनेशिया, डिस्काइनेशिया, या फिर डिस्काइनेशिया मीन्स लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। सो डिस्काइनेशिया मीन्स नॉट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बट इट इज अ डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ, बट अकाइनेशिया मीन्स लॉस ऑफ total strength of your muscle will not have any strength, that is akinesia. Next one is the muscular rigidity, so your muscle will not be flexible, your muscles will lose your flexibility and it will become rigid, so akinesia, muscular rigidity. Then postural instability, so your posture will not be stable, so whatever normal patient is there, so normal patient क्या होता है कि वो स्ट्रेट खड़ा रहता है और वो फटाक से उसको बोलेंगे चलने के लिए तो आप वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, फास्ट, मतलब लंबी स्टेप भी ले सकता है, शॉर्ट स्टेप भी ले सकता है। व्हाट हैपेंस इन द पार्किंसन पेशेंट, द पार्किंसन पेशेंट लॉस इट्स मस्कुलर स्ट्रेंथ, देन मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज मस्कुलर रिजिडिटी, देन इट्स पोस्चर, मैंने जो प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था आपको, ये देखो उसका पोस्चर कैसा है, ये जो पोस्चर है उसका सामने झुका वाला, तो इट इज नॉट अ स्ट्रेट पोस्चर, पोस्चर, ओके। सो पोस्चर उसका डिक्रीज होगा, पोस्चर इंस्टेबिलिटी, उसका स्टेबल नहीं रहेगा वो पोस्चर, ठीक है। देन लॉस ऑफ एसोसिएटेड मूवमेंट, सो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट होते हैं, मतलब जैसे आप बॉलिंग कर रहे हो, जैसे आप कुछ डांस कर रहे हो, दैट इज एसोसिएटेड मूवमेंट, सो दैट इज लॉस। देन इमेजेस, तो उसको प्रॉपर्ली इमेजेस का भी एसोसिएशन नहीं हुआ। देन these are the symptoms of Parkinsonism, these are the mostly external symptoms. Now what is the internal symptoms or another symptoms like excessive salivation, उसके मुंह में सलाइवा ज्यादा हो जाएगा और नीचे टपकने लगेगा, सो एक्सेसिव सलाइवेशन, ओके। सो मुंह में से लाल जो भी है, लाल बोलते हैं उसको मराठी में, वो टपक जाएगा, एक्सेसिव सलाइवेशन। सेबोरिया, एक्सेसिव सेबम सिक्रेशन हो जाएगा। देन मूड चेंजेस आ जाएगा उसमें, मे बी ही मे बी सडनली ही मे बी हैप्पी, सडनली ही मे बी सैड, सडनली वो पेशेंट एकदम शांत हो जाएगा, सैड हो जाएगा, और सडनली उसका एग्रेसिवनेस आएगा, so that is nothing but the mood changes. Then liver damage is there, and then other symptoms, lot of symptoms are there. So we have already discussed in the previous lecture, previous slide, okay. So what is the pathophysiology behind this Parkinsonism, how individual get the Parkinsonism, क्यों होता है, कैसे होता है? So there is a degeneration of dopaminergic neuron, okay. So remember there is a degeneration of dopaminergic neuron, degeneration or destruction of dopaminergic neuron. अभी ये dopaminergic neuron जो होते हैं आपके ब्रेन में, particularly substantia nigra part में, substantia nigra, so particularly in the part of substantia nigra there is a degeneration of dopaminergic neurons,
and if the degeneration of dopaminergic neuron result, so that neurons will become useless. Okay, so that neuron become useless means that will become a fibrous tissue. Okay, that dopaminergic neurons. Okay, so that will be deposited and they will lose their functions, and that deposit is nothing but the Levy body. That deposit are nothing but the Levy body. So destruction degeneration of dopaminergic receptor in the nigrostriatal tract or that substantia nigra part, that result in the deposition of the dead neurons. That dead neurons is known as the Levy bodies. Okay, this was question in GPAT. ये सब important. ठीक है. Now this disease is a progressive and degenerative. What do you mean by progressive and degenerative? So if anyone is suffering from this Parkinsonism, if anyone is suffering from Parkinsonism and he is not taking any treatment, so the disease is a progressive and degenerative means वो बढ़ते ही जाएगा. Progressive means disease का level बढ़ते जाएगा. ठीक है. Degenerative means degeneration of, जैसे जैसे degeneration of neuron हो जाएगा उसमें डोपामिन न्यूरॉन का degeneration, वैसे वैसे disease progressive हो जाएगा. मतलब वो बढ़ जाएगा. जो भी है बीमारी बढ़ते रहेगी, कम नहीं होगी. So that is nothing but the progressive. Okay. And this Parkinsonism, remember this Parkinsonism is because of degeneration of your dopaminergic neurons. Okay. So because of degeneration of dopaminergic neuron, there is a dopamine deficiency. Remember, because of degeneration of dopaminergic neuron, there is a dopamine deficiency. Okay. And because of dopamine deficiency, you know that we have seen in the previous lecture, so role of dopamine and dopaminergic neurons, distribution role. Okay. So because of that, dopamine will control your GABAergic neuron, and as there is no dopamine, so GABAergic neuron activity will be increased. So obviously GABA activity will be increased. Again, cholinergic predominance. Cholinergic means acetylcholine and this dopamine, they works in a coordination manner. अगर dopamine कम हो गया, acetylcholine बढ़ गया, तो acetylcholine का इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, मतलब cholinergic predominance हो जाएगा. अगर dopamine ज्यादा हो गया, cholinergic मतलब acetylcholine कम हो गया, तो आपको psychosis हो जाएगा. So they act in the coordination manner in the brain. Okay, so dopamine and acetylcholine. So if dopamine is deficient, then cholinergic system will activate. So acetylcholine will be predominance. So cholinergic predominance. That's why there is a secretion of a lot of saliva from the mouth of patient. Then seborrhea, then seborrhea, gastric trouble, etc., constipation and all that. So seborrhea, all these excessive salivation, seborrhea, mood changes, liver damage, and other symptoms, they are because of the cholinergic predominance, right? So remember this. Now, what will be your aims? What will be your targets for the therapy of Parkinson disease? So there is one movie known as Raja in the Bollywood. उसमें क्या परेश रावल स्टारकास्ट है, उसमें संजय कपूर का है और माधुरी दीक्षित, ये तीनों मिलकर के स्टारकास्ट है. उसमें परेश रावल, संजय कपूर और माधुरी दीक्षित. तो उसमें संजय कपूर का नाम रहता है राजा, और जो परेश रावल होता है वो उसका बड़ा भाई होता है, इसका संजय कपूर का, और वो पार्किंसनिज्म से उसका सफरिंग होता है. दैट ही इज हैविंग पार्किंसनिज्म इन दैट मूवी. ठीक है. और वैसे भी रियल लाइफ में भी जो परेश रावल है, ही इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम पार्किंसनिज्म. ओके. सो उस टाइम पे नहीं था, लेकिन बाद में उसको पार्किंसन हो गया, एज इट इज एज रिलेटेड. जो जैसे आदमी एज होता है, एजिंग होता है, जैसे बुढ़ापन आता है आपको 70-80s में, तो इट्स अ नेचुरल थिंग. देयर इज अ डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन एंड यू मे सफर फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस. ओके. सो दैट इज वन ऑफ द डिसीज पार्किंसन. ओके. सो व्हाट विल बी एम्स, आपको क्या करना चाहिए उस ट्रीटमेंट के लिए? व्हाट विल बी योर एम्स इन द थेरेपी ऑफ पार्किंसन डिसीज? सो दैट इज नथिंग बट द रिलीफ ऑफ रिजिडिटी. जो मसल रिजिड हो गया है उसको रिलीव करो. कैसे? बाय गिविंग द डोपामाइन. ओके. बाय गिविंग द डोपामाइन और बाय गिविंग द डोपामाइन प्रिकर्सर. अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो बाद में आपको मसल रिलैक्सेंट यूज करना पड़ेगा, बट मसल रिलैक्सेंट यूज करने की नौबत नहीं आती है. ओके. सो रिलीफ ऑफ रिजिडिटी, ट्रिमर्स एंड अकाइनेशिया. अकाइनेशिया मीन्स लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ. ट्रिमर्स मीन्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, एंड रिजिडिटी मीन्स स्टिफनेस ऑफ मसल. मसल स्टिफ हो जाएगा. ठीक है. वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा. दैट इज अ मसल रिजिडिटी. सो these symptoms can be relieved by levodopa and physiotherapy. Okay. Levodopa and physiotherapy. Next one is a correction of mood changes. Okay. Correction of mood changes. How can you correct the mood changes? By using various kind of antidepressant. Okay. And these drugs in the Parkinsonism needs clinical monitoring. Okay.
Then correction of other symptoms like excessive salivation, seborrhea, complications like sweating crisis, excessive sweating हो जाएगा उसको. So to correct these symptoms, you have to use anticholinergic. ठीक है, आपका क्लासिफिकेशन आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा इसका क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए. ठीक है, सो यू विल कम टू नो what kind of drug that can be used in the Parkinsonism. So correction of symptoms like this excessive salivation, seborrhea, complications like sweating crisis. Okay, then again treatment of cause, whatever is the cause you have to treat. For example, if a patient is suffering from Parkinsonism and he is walking on the street and by mistakenly he slipped from the वो down मतलब गिर जाता है, he gets down and कुछ अगर बोन वगैरह ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी. सो these will be the aims of Parkinson disease therapy in the Parkinson disease. Now we'll see drugs used in the Parkinson disease. So classification of drug used in the Parkinson or anti-Parkinson disease. So what will be the classification? First will be those drugs which will increase the dopaminergic activity. Okay, dopaminergic activity or dopamine. So for example, dopamine precursor. Okay, that is the levodopa. And here आपको एक सवाल आ जाएगा कि डोपामाइन क्यों नहीं यूज करते सर. तो वो बाद में बोलूंगा आपको, बिकॉज डोपामाइन इज इनइफेक्टिव ओरली. ठीक है, आप ओरली अगर डोपामाइन दोगे तो वो आपके जीआईटी में ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसका. अगर बाय चांस उसका अगर कुछ लेवल आ जाता है ब्लड में, तो ब्लड में भी डोपा डी कार्बोक्सिलेज नाम का एक एंजाइम रहता है दैट विल मेटाबोलाइज डोपामाइन. एंड अगर वो भी अगर वहां से भी बच गया, थोड़ा बहुत डोपामाइन बच गया वहां से भी, मतलब पहले तो आपके जीआईटी में डिस्ट्रक्शन होगा, दूसरा जाएगा, अगर उस डिस्ट्रक्शन होके कुछ बचा है वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड में भी एक एंजाइम है वो भी उसको मेटाबोलाइज कर देगा. अगर वहां से भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी बचता है तो वो जाएगा ब्रेन के पास, लेकिन ब्रेन में एक आदमी खड़ा है वहां पे, उसको बोलते हैं बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर. सो डोपामाइन फर्स्टली इट विल बी डिस्ट्रक्टेड इन द जीआईटी. If it reaches to a circulation, then again there is one enzyme known as a dopa decarboxylase that will destruct the dopamine, and if by chance still it get the way to the brain, then again there is one gate known as a your blood brain barrier, and dopamine cannot cross blood brain barrier as it is. So that's why dopamine, you cannot use dopamine in the Parkinson disease. So what you can use? You can use levodopa, that is the precursor of dopamine. Okay, so after metabolism in the body, levodopa will be converted into dopamine and that will go into the brain. Okay, so levodopa can cross the blood brain barrier, but dopamine cannot cross. Okay, that's why. So it is a precursor of dopamine, and next class is so it is nothing but the classification. So first class is a precursor of dopamine, that is the levodopa. Second class is a dopamine metabolism inhibitor. ठीक है, सो व्हाट इज योर अल्टीमेट एम इन द पार्किंसनिज्म? आपका एम क्या होना चाहिए कि आपको डोपामाइन का लेवल बढ़ाना है. ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरॉन्स. ओके, आपको बढ़ाना है. कैसे बढ़ा सकते हो आप डोपामाइन? कैसे बढ़ा सकते हो डोपामाइन? उसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे आपके पास? एक तो है कि आपका डोपामाइन का प्रिकर्सर दे दो, एक हो गया, या फिर डोपामाइन दे दो. डोपामाइन एज इट इज इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, तो उसका प्रिकर्सर दे दो. ठीक है, तो दैट इज. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो डोपामाइन अवेलेबल है वहां पे, वो जो मेटाबोलाइज हो रहा है उसको मेटाबोलिज्म इनहिबिट करो. ठीक है, सो डोपामाइन मेटाबोलिज्म इनहिबिटर. सो अगेन डोपामाइन का मेटाबोलिज्म कौन कौन करता है? देयर आर टू काइंड ऑफ एंजाइम दैट विल मेटाबोलाइज डोपामाइन, माओ बी एंड कॉम्ट. ओके, माओ बी वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ माओ ए एंड माओ बी. सो माओ ए क्या करेगा? माओ ए आपका जो नॉरएड्रेनालिन है, एसिटिलकोलिन है, या फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है. सो माओ ए विल मेटाबोलाइज that monoamines. Okay, that monoamines except dopamine. Dopamine is metabolized by this Mao B. Okay, so that's why Mao B inhibitors are not useful in the antipsychotic as an antipsychotic, but Mao B inhibitors are useful in the Parkinson disease. We have seen in the previous lecture. Then again, आप metabolism dopamine का कैसे inhibit करोगे? फिर से COMT. COMT means what? Carboxy orthomethyl transferase. That is another enzyme. COMT. Carboxy orthomethyl transferase, that will also metabolize the dopamine. It will cause methylation of dopamine and render inactive. ये दोनों ये कर सकते हो आप, मोटे मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर सकते हो. तीसरा क्या कर सकते हो कि पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म भी इनहिबिट कर सकते हो. चौथा ऑप्शन क्या है कि डोपामाइन रिलीज. सो व्हाट इज योर फोर्थ ऑप्शन? यू कैन
increase the dopamine by using various kind of drug. So they are nothing but the dopamine releaser. Okay. Next option में you have dopamine receptor agonist. So if you आपने देखा है कि आपको डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है, डोपामाइन का लेवल नहीं बढ़ा सकते तो क्या करोगे, जो डोपामाइन वहां पे रिलीज हो रहा है उसका एक्टिविटी बढ़ा दो. कैसे? बाय यूजिंग डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट. ओके, तो आपको समझ में आ गया ना what is the targets, what are the different targets to treat the Parkinson. So you can use dopamine precursor, for example levodopa, right? Levodopa. Then you can increase the dopamine level by inhibiting its metabolism, right? So how you can inhibit the metabolism of dopamine? By inhibiting these two enzymes. So first one is a Mao B, monoamino oxidase B. So its inhibitor is a selegiline. Okay, example. Then COMT inhibition. Okay, so COMT inhibitor. So example is tolcapone and entacapone. Tolcapone and entacapone. So these will decrease the metabolism of dopamine, and they will increase the level of dopamine in the brain, right? So next target will be peripheral decarboxylase inhibitor. Peripheral dopamine decarboxylase inhibitor. Now peripheral means what? So just imagine there are two compartments. One is a central compartment, one is a peripheral compartment. Central compartment means brain, peripheral means बाकी का जो आपका blood वगैरह है. So peripheral dopa carboxylase inhibitor, carbidopa is there, benserazide is there, benserazide and carbidopa. These are the peripheral dopa carboxylase inhibitor. Then dopamine releaser, this is amantadine. Okay. Then dopamine receptor agonist, bromocriptine, lyseride and propinerol. Then cholinergic activity suppressing agent means anticholinergic. Like example, atropine is there, benzhexol is there, procyclidine is there, then benzoyl atropine is there. Then okay, so then again miscellaneous drug or antihistaminic like orphenadrine, then promethazine. These kind of drug that can be used in the Parkinson disease. आप classification याद रखना है. It is very important. Okay, is that clear? समझ में आ गया क्या? Now next one is a pharmacology of levodopa. Now levodopa means what? Levodopa is a precursor. It is a prodrug. Okay, so it is a precursor. It is a prodrug of dopamine. Means levodopa if you consume levodopa, it will go inside the body and then it will get metabolized. Okay, it will go in the brain, and that will, after getting entry into the brain, levodopa will be metabolized into dopamine. Okay, now this is how levodopa can increase the dopamine level in the brain. Okay, so it is a product, it gets converted into dopamine in the body, right? So it is a universal anti-Parkinson drug. Remember, it is a universal anti-Parkinson drug. So this levodopa is known as a universal anti-Parkinson drug. Now what is the mechanism of action of this levodopa? So it is a metabolic precursor of dopamine. It will cross the blood-brain barrier by active process mediated by amino acid. Okay, so active process mediated by carrier amino acid. The levodopa will be taken in the brain by using active carrier mediated transport. Right. After crossing it will get metabolized and it will release the dopamine. Okay. So now here in this case, if you take a protein-rich diet, so the process of this active process is inhibited by protein-rich diet. So whenever you are on the therapy of levodopa, you have to restrict your protein-rich diet. Now then it is taken up by intrastatrial or presynaptic terminals of nigrostriatal or dopaminergic neuron. मतलब जो भी आपका substantia nigra part है, nigrostriatal. Okay, so there it will be taken up. Okay, in the dopaminergic neuron. जो dopaminergic neuron है वहाँ पे उसका taken up हो जाएगा, तो वो आके वहाँ पे store हो जाएगा वो. Now dopamine itself does not cross blood-brain barrier. Remember, dopamine does not cross blood-brain barrier. That's why we are using levodopa. Okay, that's why we are using levodopa. Then what are the different pharmacological actions? We have pharmacological actions of levodopa on CNS, CVS, endocrine system, etc. So in the CNS, it is a universal anti-Parkinson drug. Okay, so it will improve all the manifestation, all the symptoms of the Parkinsonism. It will improve akinesia, it will improve rigidity, it will improve tremors. Okay, so that's why it is a universal anti-Parkinson drug. So drug will improve memory and patient will take interest in the himself. Normally what happens,
पार्किंसन का पेशेंट है, उसका मैंने बोला था मेमोरी लॉस हो जाएगा, उसका वो डिप्रेस हो जाएगा, सो ही विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन द एनवायरमेंट, he will not take interest in himself also. But after treatment of levodopa, its tremors will be relieved, kinesia will be improved, then rigidity will be improved, memory will be improved, he will take interest in himself. That's why useful in the Parkinsonism. This levodopa is also useful in the Parkinson disease because of manganese poisoning. मैंगनीज पॉइजनिंग, ये मैंगनीज जो होता है मेटल, ओके मैंगनीज, तो वो क्या करेगा, उसका अगर पॉइजनिंग हो गया तो आपको पार्किंसनिज्म का सिम्टम मिलेगा. सो वट एवर पॉइजनिंग इज देयर बिकॉज ऑफ मैंगनीज, यू विल गेट अ पार्किंसन डिसीज और एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम. सो दैट आल्सो भी कैन बी रिलीव्ड बाय लिवोडोपा. ये मैंगनीज पॉइजनिंग की वजह से जो पार्किंसनिज्म होता है, आपके ध्यान में रखो इतना, मैंगनीज पॉइजनिंग की वजह से जो पार्किंसनिज्म होता है उसमें लिवोडोपा इफेक्टिव है, बट द लिवोडोपा इज नॉट इफेक्टिव इन द drug-induced extrapyramidal symptoms. So we have seen in the previous lectures when we were studying the antipsychotic drug. At that time, and most of the antipsychotic drug, typical antipsychotic drug, I'm not okay. जो first generation antipsychotic drugs होते हैं, so whatever the typical antipsychotics are, they have a major side effect of extrapyramidal symptoms. So whatever extrapyramidal symptoms are drug-induced, that will not be relieved by लिवोडोपा. लिवोडोपा जो ड्रग की वजह से पार्किंसनिज्म हो रहा है आपको, उसका रिलीव नहीं करेगा लिवोडोपा, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म हाउएवर डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल टू लिवोडोपा. लिवोडोपा उसमें कुछ नहीं हेल्प करेगा, ओके. सो इडियोपैथिक डिस्टोनिया इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट इज रिपोर्टेड विथ लिवोडोपा. इट इज जस्ट एडवर्स इफेक्ट. जस्ट नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिवोडोपा ऑन सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? Okay, so it will act on cardiovascular system by acting on a specific dopaminergic receptor to the renal and mesenteric vasodilation. So it will cause mesenteric vasodilation, renal vasodilation. It will stimulate beta receptor, and you know that when we will see the adrenergic drug, you will come to know what is the effect of beta stimulation, alpha stimulation. But at this stage, just remember, stimulation of beta receptor will result in the increase in blood pressure, heart rate, etc., etc. Okay. So positive inotropic action and positive chronotropic action. So levodopa will increase your blood pressure, heart rate, etc., etc. Then again, it will cause vasoconstriction by stimulating the alpha receptor, alpha 1 receptor. Okay. So that will also contribute to increase the blood pressure. Means आपका levodopa क्या करेगा, CVS के ऊपर stimulatory action दिखाएगा. Just okay. Now endocrine system के ऊपर क्या action होगा levodopa का? So आपने देखा है जो hypothalamus का part है. In the previous lectures, when I was demonstrating the dopaminergic neuron, its distribution and the effect. Okay, so at that time I have told you the dopaminergic neuron are also located in the hypothalamus part. And what is the role of dopamine over there? To decrease the prolactin level. Okay, so that's why. So endocrine system, so levodopa means what? Dopamine. आप levodopa को dopamine ही consider करो, ठीक है. So dopamine release होगा तो क्या करेगा वो? Prolactin को कम कर देगा. So there will be inhibition of prolactin in the hypothalamus. So hypothalamus में hypothalamus control करता है prolactin का, तो वहाँ पे suppression of prolactin and lactation in the humans. So levodopa will suppress your lactation. These are the pharmacological actions. Now we will see what are the ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination of your levodopa. Absorption, distribution, metabolism, elimination. So this levodopa is rapidly absorbed from your stomach and intestine. Okay, so more than 90% of levodopa is taken orally is rapidly decarboxylated into lumen. So most of the levodopa is decarboxylated into the आपका जो gut है GIT, तो वहाँ पे decarboxylation होगा इसका, ठीक है. तो आप बोलेंगे decarboxylation होगा इसका तो कैसे जाएगा ब्रेन में, उसके बारे में बोलता हूँ मैं आगे. Okay, so 90% of levodopa will be decarboxylated in the lumen. Okay, and liver also it will show first pass effect. Less than 1% reaches to the brain. 1% levodopa, whatever dose you have taken of levodopa, only 1% will reach to the brain. So that's why large dose of levodopa is required. Large dose required. अगर ज़्यादा डोज लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, ठीक है. डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे एक एंजाइम होता है पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है. तो वो बोलता हूँ मैं. अगेन पिरिडोक्सिन होता है, विटामिन B6 जो आपका है पिरिडोक्सिन, that will increase the metabolism of your levodopa.
Pyridoxine accelerate the peripheral decarboxylation of levodopa. Okay, why this pyridoxine is a cofactor. जो विटामिन B6 होता है that is a cofactor for the dopa decarboxylase. जो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो मेटाबोलाइज करता है आपको आपके डोपामाइन को, ठीक है, तो उसके लिए कोफैक्टर लगता है, उसको बोलते हैं pyridoxine B6 and that's why pyridoxine accelerate the metabolism of levodopa. Because of this metabolism, तो ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसको प्रिवेंट करना है आपको. You should have to prevent this metabolism so that dopamine so that levodopa will reach in a large quantity in the brain. How you can prevent this metabolism? To prevent this metabolism, they search a drug known as a carbidopa. So that carbidopa is combined with levodopa, and that carbidopa is nothing but the peripheral dopa decarboxylase inhibitor. So dopa decarboxylase enzyme is that is responsible for the peripheral metabolism of your levodopa dopamine that will be inhibited by carbidopa. Okay, so levodopa is combined with the carbidopa. Remember, it is very important. Levodopa is combined with the carbidopa to prevent its peripheral metabolism. अगर कार्बिडोपा वो एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो वो एंजाइम दैट एंजाइम विल नॉट बी अवेलेबल टू मेटाबोलाइज द levodopa. Levodopa will be, so levodopa का लेवल कम नहीं होगा because of carbidopa. So carbidopa is a peripheral dopa decarboxylase inhibitor. Now this carbidopa will prevent the peripheral metabolism of levodopa. Okay, and that's why levodopa and carbidopa are used in the combination. वही है, levodopa will combine with carbidopa. Levodopa is combined with carbidopa to prevent the peripheral decarboxylation of levodopa, as carbidopa is a peripheral decarboxylase inhibitor. Therefore, more amount of levodopa will be available in the brain. Then high protein diet interfere with the absorption of levodopa again because there is a carrier mediated ट्रांसपोर्ट. ओके, अगर प्रोटीन ही जाएगा वहां पे तो लियोडोपा नहीं उसको टेकन अप नहीं किया जाएगा. अगेन दिस लियोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड बाय टू एंजाइम. ओके, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंड कार्बोक्सी ऑर्थोमेटाइल ट्रांसफरेज. कैटाकोलामाइन ऑर्थोमेटाइल ट्रांसफरेज, कैटाकोलामाइन ऑर्थोमेटाइल ट्रांसफरेज, राइट. सो दीस टू एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. दिस पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्रेन. रिमेंबर, ये ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्रेन के बाहर क्या हो रहा है, ये याद रखो. ठीक है, so these metabolized by Mao and Comte in the, and the main principal metabolite of this levodopa is a homovalenic acid. HVA. Okay, and some part of this levodopa is also converted into noradrenaline. Okay, समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म उसका. Now next one is adverse reaction. So what is the adverse reaction of this levodopa? So early toxicity is there and late toxicity is there. So early toxicity, what will have? You have on the GIT you will have nausea, vomiting, anorexia. Anorexia means क्या, भूख न लगना. nausea means क्या, मलमल होना. vomiting means क्या, vomiting करना. ठीक है, सब कुछ बोलना पड़ रहा है. So GIT, nausea, vomiting, anorexia. Okay, then on the cardiovascular system you will have postural hypotension. Postural hypotension last time मैंने बोला था, अगर आप पोजीशन चेंज करोगे सोने की या बैठने की तो आपको hypotension होगा. That is nothing but the postural hypotension. Then palpitation, sinus tachycardia, increased AV conduction. These are the early signs and symptoms of toxicity. Early signs and symptoms of adverse drug reaction. Then late toxicity you will have behavioral effect. So agitation, confusion, restlessness, hypomania, hallucinations, delusions, depression, and suicidal attempts. That will be a late behavioral toxicity. Then late toxicity will be on seen as like long-term therapy result in abnormal movement. That is a choreoathetosis involving the net. Means आपका वो movement होता रहेगा. Choreoathetosis means what? So involuntary movement of neck. देखो आप जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसा करते रहते हैं. Choreoathetosis movements. Okay, so that is a rotation, involuntary movement of your neck. Then extremities also. Symptoms similar to neuroleptic malignant. Miscellaneous toxicity. Some patients show positive Comte test. Now this Comte test is what? This Comte test is nothing but the deposition of antibodies on the red blood cell. Okay, if there is a deposition of antibodies on the red blood cell, it will have a positive Comte test. You will have a positive Comte test. Okay, so sometimes what happens, levodopa also gives positive Comte test.
वहाँ पे तो कोई डिपोजिशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट पॉजिटिव है लीवर। देन राइज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। रेड कलरेशन ऑफ यूरिन, आपके यूरिन को रेड कलर आएगा, ठीक है। अगेन अनदर ड्रग इज देयर known as the rifampin. Okay, rifampin, that is anti-tubercular drug that will increase the, that will color the orange color to the urine. Okay, ये याद रखो आप। then also gives false positive test for ketone bodies, which is nothing but the deep stick test, ठीक है। so these are the adverse effect of your levodopa. now next one is a drug interaction of levodopa. तो levodopa कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्शन करेगा उसका, ठीक है। so drug interaction of levodopa, drug interaction of levodopa. So levodopa can increase the risk of bleeding in patient with the पेप्टिक अल्सर। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है और लियोडोपा ले रहे हैं तो आपका ब्लीडिंग बढ़ जाएगा पेट में, तो आपको बाद में जो टॉयलेट होगा वो ब्राउन कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ब्लीडिंग। सो लियोडोपा कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर। देन मैलिग्नेंट मेलानोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा मीन्स इट विल इंक्रीज द melanin formation. Levodopa is a precursor for melanin and it should be used cautiously in the patient with malignant melanoma. मतलब जो आपका मेलेनिन का कैंसर है उसको बोलते हैं malignant melanoma. Okay. Now again this levodopa will interact with Mao inhibitors and it may precipitate severe hypertension. ठीक है, so it may precipitate severe hypertension. Then again pyridoxine, pyridoxine का बोला है मैंने आपको, pyridoxine will accelerate the metabolism of levodopa, peripheral metabolism. Okay. Then again reserpine, reserpine is nothing but the Rahul P alkaloid. We have seen in the previous chapter that they are nothing but the reserpine is nothing but the antipsychotic. It will act antipsychotic by depleting the catecholamines. जो भी आपका catecholamines है वो उसको deplete करेगा, ठीक है। तो catecholamines में dopamine भी आता है, याद रखो। So dopamine को क्या करेगा, deplete करेगा, means it will block the effect of dopamine, right? Then next one is methyl dopa. So methyl dopa is another drug. Okay, so don't be confused in the levodopa, methyl dopa and dopamine. So levodopa is used in the Parkinsonism, which is a precursor of dopamine. This methyl dopa is a central alpha 2 agonist. Okay, ये methyl dopa जो है वो अलग है, it is a sympathetic drug. Okay, it is a sympathetic agonist. So it will increase the adverse effect of levodopa. Then anticholinergic, it will increase the degradation of levodopa in the stomach. So anesthetic, sometimes what happens, levodopa will increase the cardiac toxicity of halothane and anesthesia. So these are the drug interaction of levodopa. Next one is a drugs used in the, we are seeing the drug used in the Parkinsonism. We are seeing the levodopa, that is the main drug. Now next is a Mao B inhibitors. What are the different Mao B inhibitors used in the Parkinsonism? Okay, so first one is a selegiline. Okay, first one is a selegiline. So it is a selective irreversible inhibitor of Mao B. Mao B means monoamino oxidase B. Okay, so we have seen in the last lecture also there are two kinds of Mao A and Mao B. So Mao A will metabolize your noradrenaline, then serotonin, 5-hydroxytryptamine, then acetylcholine and all that. Okay, it means catecholamine. And Mao B will metabolize dopamine. Okay, so in Parkinsonism what is happening? There is a deficiency of dopamine because there is a distraction of dopamine containing neuron, right? तो यहाँ पे Mao B का रोल है, not Mao A का. So ये याद रखो. So selegiline is a irreversible inhibitor of Mao B. So Mao B will be inhibited and there will be no metabolism of dopamine. Ultimately there will be increase in the dopamine level in the brain, particularly in the nigrostriatum part of brain. Okay. Then what is the adverse effect of this selegiline? That is due to increasing the incidence of central dopaminergic effect like dyskinesia, nausea, hallucination. ये डोपामाइन का लेवल बढ़ाएगा, उसकी वजह से जो डोपामाइन का जो एडवर्स इफेक्ट आएगा वो होगा dyskinesia, nausea, hallucination. ठीक है. Now it is this selegiline. Now this selegiline is metabolized to active metabolite, that is amphetamine and metanephrine. Okay. These two are the metabolites of selegiline. Remember. It is metabolized to amphetamine and metanephrine. Okay. Now next one is a COMT inhibitors. Catecholamine orthomethyl transferase inhibitor. C for catecholamines, O for ortho, M for methyl, T for transferase. Means catecholamine में catecholamine का जो methyl group है ortho position पे वहाँ पे transfer करेगा ये एंजाइम कौन, COMT, COMT. Now this COMT is responsible for the
metabolism of dopamine also. Okay, now by inhibiting this COMT you can increase the level of dopamine in the brain. Okay, so what are the different inhibitors? Tolcapone, it will inhibit the COMT. By inhibiting the COMT, central and peripheral metabolic degradation. Now this COMT is also present in the periphery. Okay, so tolcapone will inhibit the COMT centrally as well as peripherally. मतलब जो ब्रेन में भी COMT है उसको भी इनहिबिट करेगा, जो पेरीफेरी में भी COMT एंजाइम है उसको भी इनहिबिट करेगा. Okay? So that will increase the level of dopamine, right? It will also prolong the levodopa. It will also decrease the metabolism of levodopa and prolongs the its plasma life. levodopa का जो लेवल होता है उसको बढ़ाएगा और उसका हाफ लाइफ भी इंक्रीज करेगा. Now what are the adverse effect of this tolcapone? So nausea, orthostatic hypotension, dyskinesia, diarrhea, induction, then hallucination, serious hepatotoxicity. Now this tolcapone has a serious hepatotoxicity. This is very important. Serious hepatotoxicity. Now there is another drug known as entacapone. It is a congener of your tolcapone. Tolcapone का ही दूसरा भाई है, उसको बोलते हैं entacapone. दोनों भाई है. ये tolcapone क्या है? Hepatotoxic है. It has a serious hepatotoxic adverse effect. That's why this उसका भाई को यूज करो. देखो अगर आपको दो भाई है उसके साथ में एक के साथ जनता नहीं आपका, दूसरे को यूज करो. ठीक है. So entacapone, it is a less hepatotoxic than tolcapone. We are seeing the drugs used in the Parkinsonism. We are seeing levodopa, then Mao B inhibitor, that is seliginin, and we have seen the COMT inhibitors, tolcapone. Now next one is a dopamine releaser. Those drugs which will release the dopamine. For example, the drug is amantadine. Basically this amantadine was an antiviral drug. ठीक है. amantadine जो है वो antiviral drug है, but बाद में उसका देखा गया कि ये dopamine का release करता है. It will increase the dopamine release. So that's why it is also used in the Parkinsonism. It is also useful in the Parkinsonism. But basically it is an antiviral drug. But this amantadine is nowadays used in a lot of conditions. It is used as an orphan drug. Yeah, amantadine, it is used as an orphan drug in various conditions. So it is basically an antiviral drug that acts as a liberating the dopamine from the residual intact nerve terminals. जो भी डिजेनरेशन होगा है, जो भी न्यूरॉन का डिजेनरेशन होगा है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन होगा है, तो उसमें से डोपामाइन तो नहीं निकल सकता, लेकिन जो भी बचा है उसमें का डोपामाइन वो रिलीज कर देगा. कौन? एमेट्रिन. सो इट विल रिलीज द डोपामाइन फ्रॉम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स. ओके, एंड आल्सो इट विल इनहिबिट द NMDA receptor. So it will inhibit the glutamate receptor NMDA. Then it has a adverse effect. Amantadine has an adverse effect of ankle edema. आपका जो पैर का जो एंकल है उसमें एडिमा हो जाएगा, वो सूज जाएगा. ठीक है. सो इट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ amantadine. देन libido reticularis. These are the adverse effect of amantadine. आप बोलेंगे libido reticularis होता क्या है? आप ज्यादा टेंशन मत लो, ये एक सिंपल होता है. अभी देखो इसमें क्या है, स्किन के ऊपर क्या होता है, रेड कलरेशन आता है. ये जो libido reticularis है इसका मतलब क्या है कि आपके स्किन के ऊपर रेड कलरेशन आता है. और वो जो रेड कलरेशन है उसका एक पैटर्न होता है. जैसे आपने नेट देखा होगा, फिशिंग नेट, जो फिश पकड़ने का नेट यूज करते हैं उसमें कैसा एक पैटर्न रहता है. ठीक है, वैसा उस टाइप का पैटर्न आपके बॉडी पे आ जाएगा, रेड कलरेशन. ओके, सो दैट इज नथिंग बट द लिबिडो रेटिकुलरिस. देन रेस्टलेसनेस, आपको रेस्टलेसनेस फील होगा. दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ दिस amantadine. Okay, in toxic doses this amantadine will cause convulsions and mania. So remember the adverse effect: ankle edema, libido reticularis, restlessness, and then convulsion and mania. Convulsion and mania, that is if you use this amantadine in very large dose. Then next class is a dopamine receptor agonist. So dopamine receptor agonist, for example, bromocriptine. Okay, so bromocriptine is related with the ergot alkaloid. जो ergot alkaloid है उसके रिलेटेड ड्रग है bromocriptine. ergocriptine ये वगैरह जो है ना, ergocriptine, ergot alkaloids. So it is a dopamine receptor agonist, so less toxic than levodopa. Okay,
So nausea, vomiting are the side effect. So it is a specific D2 receptor agonist. It will increase the functioning of dopamine. It will increase the functioning of dopamine receptor. So dopamine receptor agonist, D2 receptor agonist. Okay, so it has less side effect than levodopa. Nausea, vomiting, they are a simple side effect, and that can be easily controlled by domperidone. So that is a prokinase drug, domperidone, anti-emetic drug. ठीक है? So domperidone control करेगा. Then again vasospasm leading to gangrene, erythromyalgia are the adverse effect. Vasospasm की वजह से क्या होगा, गैंग्रीन होगा, और erythromyalgia मतलब क्या, जो ब्लड सेल है आरबीसी उसका फंक्शनिंग कम करेगा. So they are the adverse effect. Bromocriptine is nothing but the D2 receptor agonist. Remember, ठीक है? Hello, am I audible you clearly? Next class is anticholinergic. Okay, anticholinergic. Cholinergic जो है एसिटिलकोलिन का जो एक्शंस है उसको जो ब्लॉक करेगा उसको बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक. सो दोज ड्रग्स व्हिच विल ब्लॉक द action of acetylcholine, they are nothing but the cholinergic, anticholinergic, and those will stimulate the acetylcholine action. They are the cholinomimetic और parasympathomimetics. देखो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि what is meant by sympathomimetics, what is meant by sympatholytics, what is meant by parasympathomimetic, what is meant by parasympatholytic, what is meant by adrenolytic, what is meant by adrenomimetic, what is meant by cholinomimetic, what is meant by anticholinergic. ये आपको समझ में आना है. Those drugs which will increase the functioning of sympathetic nervous system, they are known as a sympathomimetics. Those will block the sympathetic nervous system, they are nothing but the sympatholytics. Those drugs which will increase the activity of parasympathetic nervous system, they are known as a parasympathomimetics. Okay, and those drugs which will block the parasympathetic nervous system, they are known as a parasympatholytics. It is just a simple thing. ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या है. ठीक है. So anticholinergic means parasympatholytics, right? So these are nothing but the atropine and its substitutes like homotropine, atropine. Those drugs, they are also used in the Parkinsonism. Mostly they are used because of the their anticholinergic activity. You see, dopamine का लेवल अगर कम हो जाएगा, cholinergic जो है एसिटिलकोलिन वो बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो उसका इफेक्ट मिलेगा. तो उसका इफेक्ट कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं. मोस्टली जो सलाइवेशन होता है, सिबोरिया होता है, जो स्वेटिंग होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए. देन देयर इज वन ड्रग नोन एज बेंजहेक्सोल. सो बेंजहेक्सोल, इट इज आल्सो अगेन अ यूनिवर्सल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म. ओके, इट इज अ सिंथेटिक एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट. एट्रोपिन का ये सब्स्टिट्यूट है, सिंथेटिक मतलब सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एट्रोपिन. इट इज यूज्ड टू कंट्रोल मोस्टली muscular rigidity, tremors, siluria, seborrhea, जो बोला था मैंने अभी. Okay, adverse reaction of this benzoxazole includes xerostomia. Xerostomia means what? Xerostomia means what? Xerostomia means dryness of mouth. जो dryness of mouth होता है because of atropine and all that. So that is nothing but the xerostomia. So dryness of mouth is also known as xerostomia. Then blurred vision. आपका जो vision है blurring होगा. So blurring of vision. Urinary retention. आपका urine retention होगा. You will not able to pass the urine. That are nothing but that is the common adverse effect of anticholinergic. Okay. So dryness of mouth, blurred vision, urinary retention. These are the common effect of anticholinergic. Now next one is so we have seen the Parkinsonism disease. That is also neurodegenerative disease. Okay. ये न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है पार्किंसनिज्म में. नाउ देयर इज अनदर ड्रग, अनदर सिंड्रोम नोन एज और अनदर डिसीज नोन एज मोटर न्यूरॉन डिसीज. इसमें भी डीजनरेशन होता है. नाउ दिस एंटी पार्किंसन ड्रग दैट इज ओवर. ठीक है, यहाँ तक आपका एंटी पार्किंसन डिसीज ड्रग एक्टिंग ऑन इन द पार्किंसन ओवर खत्म हो गया. नाउ देयर इज वन मोर डिसीज नोन एज मोटर न्यूरॉन डिसीज, MND. ठीक है, आपने एक साइंटिस्ट देखा होगा स्टीफन हॉकिंग, and he is suffering from the motor neuron disease. मैं आपको दिखाता हूँ उसका. So आपने इसको देखा होगा, ये साइंटिस्ट जो है स्टीफन हॉकिंग. So this scientist known as Stephen Hawking, and he was suffering from the motor neuron disease. That is a degeneration of motor neurons. जो भी motor neurons होते हैं आपके, जो भी functioning के लिए, जैसे आप चलते हो, that is a motor activity functioning. So walking is a motor activity.
For example, exercise is a motor activity. His motor neuron was totally distracted and he was not able to eat by himself also. उसको खाना भी नहीं खाने आता था और कुछ नहीं करने आता था उसको, ठीक है. सो एक ही चेयर पे बैठे रहते थे वो, और वही से उन्होंने सब कुछ रिसर्च किया था. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रिसर्चर, ठीक है. उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया है, मोस्टली इन द गोल्ड पार्टिकल एंड ऑल दैट. जो गोल्ड पार्टिकल्स वगैरह जो है वो इन्होंने किया था, स्टीफन हॉकिंग. तो इनको था वो मोटर न्यूरॉन डिसीज. नाउ लेट्स कम टू द मोटर न्यूरॉन डिसीज. So this is a motor neuron disease. Stephen Hawking was super important this. Okay, it is also known as motor neuron disease. Is also known as amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. This motor neuron disease. It is one of the most severe degenerative neurological disorder. Both central as well as peripheral neurons are affected. Mostly the motor neurons. So it is also a rapidly progressive disease, and it is because of this excessive stimulation of glutamate receptor. And this disease is because of excessive stimulation of glutamate receptor. जो excitatory आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है, उसकी वजह से क्या है, कंटिन्यूस ये होते रहता है मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल्स मिलते रहता है, और वो बाद में वो मोटर न्यूरॉन मर जाते हैं, मतलब दे डाइज. ओके, सो डिस्ट्रक्शन विल बी देयर. सो इन दैट केस देयर इज वन ड्रग known as a riluzole. It will not cure the disease, but it will prevent the progress of disease. Riluzole is a 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothioxide derivative. It blocks the release of glutamate and post-synaptic NMDA receptor, N-methyl D-aspartate. Okay? And it protects the neuron. It will not regenerate neuron. जो खराब हो गया है, जो मर गया है, उसको जिंदा तो नहीं कर सकता वो. जो डिस्ट्रक्शन हो गया न्यूरॉन का, उसको तो हील नहीं करेगा. But the drug will prevent the progress of disease. Okay, this is riluzole, and this riluzole is also again anticonvulsant. It is also used in the muscular dystrophy. It is a orphan drug used in the muscular dystrophy. So this was our today's lecture.